Thank you for coming on a holiday. We had some very good news to share with you on PLI for textiles and also the news that came last night on cotton import duty. Without wasting any time, I'll request Secretary Sir to make the opening remarks and thereafter he'll be happy to reply to your questions. Sir, over to you. Yeah. Very good afternoon, friends. As you are aware, textile has been one of the sectors for which PLI scheme was approved. Our PLI is basically made for, as you know, a man-made fiber on technical textile. The reason for that also is known to you because while world over a man-made fiber constitutes more than 70% of the total textile segment, in India it's basically a cotton dominated. More than 2/3 is cotton and less than 1/3 is man-made fiber. A reason for that is also known because India is the largest producer of cotton and our climate also suits for cotton clothes. But when we have to play a much bigger role in the international market, like you must have heard our minister saying that from a $43 billion which is expected this year export, which has happened this year, we need to reach a 100 billion export target. That would be possible only if we have a larger share in man-made fiber because the international market is dominated by man-made fiber. In fact, it is expected that in next 2 years, the man-made fiber would constitute nearly 80% of the total textile trade. And the other, of course, is technical textile. Because in India, technical textile level of penetration is low. There is a lot of scope for more users of technical textile. There is a scope for import substitution. There is a scope for export. So that's why this man-made fiber and technical textile was chosen as far as PLI for textile was concerned. Here also we were choosy in the sense that the entire man-made fiber and technical textile segment was not open. We decided to have 40 top traded HS lines, HSN lines, where India's share is less than 5%. And then we included also fabrics. 14 top traded fabric lines were also taken and 10 segments of technical textile was taken. We obtained the approval of the cabinet and thereafter we issued the notification and the guidelines and then we opened the window for application. The window for application was opened for 2 months from 1st January to 28th of February. And in response to that, we got 67 applications. As you are aware that our scheme is basically of scheme part 1 and scheme part 2. The scheme part 1 is where a minimum investment required is 300 crore and minimum turnover required is 600 crore. Whereas scheme part 2, the minimum investment required is 100 crore and the minimum turnover required is 200 crore. So under scheme 1 and scheme 2, we got altogether 67 applications. 15 applications were received under scheme part 1 and balance 52 applications were received under scheme part 2. Now we have thereafter all these applications have been examined on different parameters. And after twice the selection committee meeting has taken place. The second technical selection committee took place only on 13th. Yesterday. Yeah. And out of 67 applications, we have approved 61 applications. There are 6 applications where there are a few small issues. So we have kept that on hold right now. But 61 applications we have approved and intimations are being sent to these 61 players whose applications have been approved. Now these as per the projections made by these companies, they would be investing on 19,077 crore. They would be generating a turnover of about 1,85,000 crore. Sir, just a minute. You said 90,077 crores to be invested by these 61 company. Yeah. 77 crores. 19077 crores. And the projected turnover for the notified lines will be, as per their projections, 184,917 crores. Sir, please repeat 1,84,917 crore over a period of 5 years.
And as per their projections, the employment generation would be 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000. Now turnover, actual turnover would be more, but then they would not get incentive for the entire turnover. They have been allowed that even they can make non-notified products also, but for that non-notified products turnover would not be counted for the purpose of incentive outgo. We have got applications for apparel. We have got applications for fabrics. I mean man-made fiber apparel, man-made fiber fabrics, technical textile, as well as quite a few applications have come for the multiple segments. Like one would be doing more than maybe they would be doing fabrics also and technical textile also. A fairly good number of states have been covered actually. It's not that most of the applications have come from any particular region. We have states like covered are like Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, UP, West Bengal, Daman and Goa. So applications have been received from all over India. And we are pretty happy with the response we have received. And if you have any queries, you can ask me. Sir, we get the applications. Out of these 61, one, two, three, four, five, six, seven, eight. 8 applications. Eight are the people. Yes. And others also, so if you could give us some. Yeah, we can give you we can give this list. No, you can give the list and I will. टोटल नंबर बता दीजिए और दूसरा नहीं, हमने तो 61 की list है. We have a 61 list actually. There are name of the applicant, state, district, exact place. Everything is there in one piece of paper, so we can give it to you. Which are the companies? Would you like to name few companies? So please name the top Major 3 states जहाँ से सबसे ज़्यादा applications हैं and the top 5 companies. It becomes easier for us to. It's a number of applications. देखिए वैसा है कि अगर नंबर ऑफ जैसे पहले if I start Andhra Pradesh has 1 2 3 4 5 6 7 applications. Andhra Pradesh 7, Uttar Pradesh 8. Uttar Pradesh has 8. If we go to let us say Gujarat, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 applications from Gujarat. So similarly, I can give you the list. Yeah. Selected. Yes, selected. I'm talking of 61, which is selected. Top 5 companies, sir. No, in terms of top 5, in the sense that in terms of investment or in terms of investments. Part 1, basically. See, basically the companies which are in part 1, as I told you, part 1 means that minimum investment has to be 300 crores and minimum turnover has to be 600 crores for them to become eligible. And then every year they also have to give a turnover of 25%. So that is the scheme. Like first year someone invests, let's say, of 400 crores and get 800 crores of turnover or 700 crore turnover. He gets 15% of that in the first year. And thereafter, or maybe for the sake of calculations or simplification, I can tell you, suppose somebody invested 300 crore, he gets a turnover of 600 crores. That means he gets 90 crore in the very first year. And thereafter, next year, on the 600 crore base, he grows by 25%. That means 150 crores. On that, 14% he will get. And the next year, similarly, he will keep getting it. So the companies which has come in the 13 companies which have been approved in the part 1, they are the ones who would be investing certainly more than 300 crores. They are, some of them are Trident Limited, Sahi Exports Private Limited. Yeah, Sahi Exports, they are the largest exporter of textile from India. They have a turnover of, they have export of about 8,000 crore. Total 13 companies. 13 companies, 1 or 2 more I can say, like Pratibha Syntex Limited or MCPI Private Limited, Goa Glass Fiber Limited, they are Afgol India Private Limited. So there are Himmat Sinka, Seed Limited.
So there are 13 companies which would be investing more than 1,300 crore. Highest wala bhi dekh lo. There is some, I think 1,500-1,600 crore. Goa Glass is investing something like 1,500 crores or so. Can have a look. 154 crores. 1,654 crore investment is highest by a Goa Glass. Okay. I'll tell you 1 minute. Goa Glass Fiber will be investing 1,654 crore. Fiber. Trident would be 15,000. 1,654 crores. Trident would be investing 1,609 crores. MCPI would be investing 1,383 crores. MCPI 1,383. Trident is 1,609. CPI. सही का देख लीजिए एक मिनट. Third is MCPI, fourth is Afgol, which will be investing 585 crores, and fifth is Himmat Singha, who will be investing 523 crores. These are the top 5 investors. Yeah, na? 436 crores. 436 crores. Sai would be investing. Sir, for scheme growth, the minimum investment should be of 100 crore. The turnover is not 300 crores. 200 crores. And total companies selected under scheme 2 61 are starting. You ask me something? Yeah, tell me. Total companies selected for this scheme 2, sir. No, applications was 52 and 15. So out of 15, we have selected 13. As I told you, 15 plus 52 were the applicants. So out of 15, 13 had been selected, and out of 58, 48 had been selected. 48. But not that others have been rejected. There are a small bit of a kind of a clarification, because one of the criteria was that from a group company we will select only one company. Now some of the companies have from one group company, more than one company have also applied, and in some cases some information is missing. So we will be taking a decision on balance 6 also very soon. I tell you, basically, they have been given time of 2 years for the investment. What we call it the first 2 years, including this year now, 22, 23, and 22, 23, 24 are what we call a gestation period, during which they are supposed to complete their investment. Because 24 March. 24th March. But if a company completes investment earlier and starts production in earlier, then he can also start getting incentive earlier. Otherwise, 2 साल दिया गया है उनको invest करने के लिए. उसके बाद 3rd year का performance देखा जाएगा. That would be called performance year number 1. And next year to that, he will start getting the incentive. So ऐसे देखा जाए तो total 5 years scheme would basically is spread over 8 years. पहले 2 साल investment, फिर तीसरे साल का परफॉर्मेंस, 1 साल का कंप्लीट परफॉर्मेंस होगा, तभी तो देखा जाएगा कि दोनों क्राइटेरिया 24-25 परफॉर्मेंस में चला जाएगा. हाँ, तो बेसिकली इंसेंटिव जो है वो 25-26 से मिलेगा, लेकिन लोगों को 1 साल पहले भी मिल सकता है. कोई अगर इसी साल अगर कंप्लीट कर लेता है इन्वेस्टमेंट तो उसको मिल सकता है. हमने ये भी कहा था कि approval से पहले भी someone was very sure of getting approved of something, he could have started investment even from the date of notification. नोटिफिकेशन से समय से भी किसी ने 24/9 को हमने नोटिफाई किया था, 24 सितंबर 2021, तब से भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा तो दैट वुड बी काउंटेड, बिकॉज बोथ द क्राइटेरिया विल हैव टू बी सेटिस्फाइड. एक क्राइटेरिया से नहीं होगा एक्चुअली. Projected turnover that you had said of 184917 crores. Yes. Over a period of 5 years. Yes. Sir, the job relation का है 240,000. ये डायरेक्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट का है. हाँ, डायरेक्ट जॉब का है. और दूसरा इसका बेसिस कैसे है, आपने कैसे काम? अब देखिए ऐसा है कि या तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, मतलब इन्होंने देयर आर सर्टेन नॉर्म्स बेसिकली डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री. इफ यू आर इन अ apparel sector, there is a norm that 1 crore of investment generally leads to how many employment.
Similarly, there are like technical textile or fabric may processing. So these are approximations actually. One cannot say this could be more also, this could be slightly less also, but basically there are there are industry norms as far as the generation. So it depends on what kind of industries are there. There must be some minimum commitment that the government has taken in terms of employment. No, the criteria was no employment. See, what is happening that employment was a criteria, but then you have a criteria coming into picture when you have a kind of a, if your money which is available with you is not sufficient to take care of all the approved applications, but otherwise basically there are only two conditions have to be satisfied. One is that of investment and the other is that of turnover. And investment would certainly will lead to kind of a generation of manpower. So we don't have any. Monitoring will be on your investment and turnover. It won't be too much on. No, but we would be collecting the data certainly. But right now monitoring would be primarily on investment actually, because so quarterly monitoring would take place on investment. सब जो आपने शुरू में बताया था कि मैनमेड फाइबर का आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, वो अभी कितना है और इस स्कीम के पीएलआई स्कीम से आपको क्या लगता है कि उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो लगभग कितना होगा? देखिए, अब जरूरी नहीं है कि केवल इस स्कीम में, ऐसा भी नहीं है, इस स्कीम से बाहर भी राइट नाउ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया एक्चुअली. इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज वन इज एन इंसेंटिव अंडर दिस स्कीम, but equally important is incentive which is being given by many other states also under their industrial policy or on the textile policy. So and so right now I wouldn't be able to tell you कि जो अभी जैसे 2/3 1/3 approximately है वो exactly इस 5 साल के बाद कितना होगा, that would be a matter of projections. But basically the idea is that why we don't want that our cotton sector would become less important or something, but then maybe we will discuss little later, because cotton की अपनी एक limitations ये है कि area under cotton would not increase much. Because total area, cultivated area basically will not increase, so cotton area is also not expected to increase much. Unfortunately, it's a fact that the cotton production or the productivity has been stagnant for a few years, even though we are basically trying with the agriculture ministry to increase the productivity of cotton and even a ELS cotton production. But then what it can go is that from about maybe you will have an increase of 5% or 10% by way of yield. So the raw material primarily will come from the man-made fiber. And man-made fiber raw material comes primarily from the refineries. As you know, and we have adequate refinery capacity. We have enough production of naphtha in the country. And from naphtha, what is produced is paraxylene. Paraxylene gets converted into PT and MEG, which is a major source of man-made fiber. And India has a very good, in fact, India has more refinery capacity than we require. We refine and refine oil is also sold outside actually. So we have a lot of raw material as far as man-made fiber is concerned. So I think the percentage would keep increasing. What 5 years from hence, whether it will become something like a 50-50 or so is a matter which can be worked out. अप्रैल और ये टेक्निकल ये भी इसमें आई. हाँ, मैंने जैसा आपको बताया ना, नहीं अपैरल है, अपैरल दो तरह के होते हैं. अपैरल जो है वो मैनमेड फाइबर का भी अपैरल हो सकता है, अपैरल जो है वो कॉटन का भी या सिल्क का भी या भी हो सकता है. तो इसमें अपैरल भी है, बट वो मैनमेड फाइबर के अपैरल हैं. फैब्रिक्स जो है वो भी मैनमेड फाइबर का फैब्रिक्स है. और टेक्निकल टेक्सटाइल तो आप जानते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल प्राइमरली जो है वो दैट इज नॉट बेसिकली अ फंक्शनल टेक्सटाइल. वो जो हम अभी भी जैसे इन्होंने लगा रखा है अपना मास्क, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है. आपने पीपी किट की कहानी जानी है जो हमारे मंत्रालय ने क्या किया था, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है. बहुत सारे मटेरियल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. आज के दिन में कैनाल की लाइनिंग होती है, कैनाल की लाइनिंग सीमेंट से होती है, सीमेंट लाइन कैनाल यू विल फाइंड. अब नाउ वी हैव अ मटेरियल जियो टेक्सटाइल कैन बी यूज्ड. रोड कंस्ट्रक्शन जियो टेक्सटाइल कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब तो उसी तरह से सारे जो अलग अलग टेक्सटाइल है, मेडिकल टेक्सटाइल है, डिफेंस टेक्सटाइल है, पैकेजिंग टेक्सटाइल है, तो ये सारी चीजें जो है वो 10 सेगमेंट इसमें आते हैं. 2000 बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल. एंड इट्स अ वेरी, कोई भी आप कार लेते हैं तो कार के अंदर जो आपका एयर बैग होता है वो टेक्निकल टेक्सटाइल का बना होता है. बेल्ट जो आप यूज करते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल का बना होता है. जो अंदर जो छत पे जो चीजें लगी होती है अंदर से वो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है. तो टेक्निकल टेक्सटाइल का स्कोप बहुत है और हमारा लेवल पेनिट्रेशन केवल 5 to 10% है. जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ टेक्निकल टेक्सटाइल पेनिट्रेशन इज समथिंग लाइक 30-35% काइंड ऑफ. सो हमारे यहाँ इंक्रीज भी उसका बहुत बढ़ेगा.
इनफैक्ट वेरी रिसेंटली वी हैड अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, उसके बाद हम एक एक सेगमेंट में, अभी हमने जियो टेक्सटाइल के साथ काम किया था। जियो टेक्सटाइल का सबसे बड़ा जो है, जैसे वाटर रिसोर्सेज है, रोड सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स के साथ हम मीटिंग करके कैसे उसका यूज बढ़े वो भी करते हैं, फिर इंपोर्ट खत्म करें। अभी क्या है कि थोड़ा सा अभी हम नेट एक्सपोर्टर बने हैं। We have about 2 billion of import and slightly more than 2 billion of export. Earlier we were net importer, but हम 2 billion export can go to about 8 billion export easily. जी हाँ, हमारा टारगेट यही है कि 2 बिलियन के आसपास जो एक्सपोर्ट है उसको हम 8 बिलियन to 10 बिलियन ले जा सकते हैं। इसी से जुड़ा सवाल मेरा है जी में बहुत इजाफा हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो लखनऊ के व्यापारी है, जो दिल्ली के हैं, जो कुर्ता पजामा 450 रुपए का आता था, आज वो 700 रुपए सूती कुर्ता पजामा और खादी को, ये कब तक इस पर रोक लगेगी और क्या वजह इसकी? देखिए, ऐसा है कि खैर मैं सेकंड इशू पे आ भी रहा था, तो आपने जो पूछा ये बात जरूर है कि कॉटन के जो प्राइसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि आपको पता है कॉटन ईयर जो शुरुआत होती है, जो कॉटन अराइवल शुरू होता है, तो 1 अक्टूबर हम मानते हैं कॉटन ईयर, 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। तो अक्टूबर के बिगिनिंग में जब कॉटन अराइवल शुरू हुआ तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि कॉटन के प्राइसेज जो हैं वो घटेंगे, क्योंकि नया स्टॉक आता है तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेज घटेंगे। उस समय जो प्राइसेज थे और उसके बाद प्राइसेस जो है वो लगातार अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बढ़ते ही रहे हैं। और जनरली जो हम प्राइस कहते हैं वो हम पर कैंडी ऑफ जो लिंट कॉटन होता है उस हिसाब से कहते हैं, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली नाउ 90,000। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं कॉटन के तो एक सेगमेंट के लिए वो बड़े फायदे की चीज है। फार्मर्स जो हमेशा कहते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट ऑन आवर दिस थिंग, कॉटन फार्मर दिस ईयर हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज दे हैव गॉट जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम 2 टाइम्स प्राइसेस दे हैव गॉट। बट वही है कि उनके लिए अच्छी बात है। दिस ईयर वी एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट 10-15% कॉटन एरिया एकरेज शुड इंप्रूव बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी गुड रेट। बट देन कॉटन इज बेसिकली रॉ मटेरियल जिससे पहले यार्न बनता है, तो प्राइस कॉटन प्राइसेस हायर मींस यार्न प्राइसेस आल्सो वुड बी हायर। यार्न प्राइसेस हायर होंगे तो फिर उसी के हिसाब से फैब्रिक्स और गारमेंट प्राइसेस भी हायर होंगे। बट टुडे इट इज नॉट कन्फाइंड टू कॉटन। आप कोई भी रॉ मटेरियल देख लीजिए, आप स्टील देख लीजिए, आप सीमेंट देख लीजिए, कोई भी रॉ मटेरियल देख लीजिए, एंड दिस इज नॉट अ फिनोमेना व्हिच इज कन्फाइंड टू इंडिया, दिस इज ऑल ओवर। अच्छा, कॉटन का क्या है कि कॉटन इज इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी। कॉटन का प्राइस जो इंडिया में होता है समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज, आईसी। आईसी जिस से मूव करता है, इंडिया में भी कॉटन प्राइसेस मूव करते हैं। तो हम सारे स्टेक होल्डर से हम डिस्कशन हमेशा करते रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा किसी ने स्टॉक होल्ड करके रखा हो जिससे प्राइसेस बढ़ रही हैं, या ऐसा कॉटन के प्राइस की आड़ में कॉटन यार्न वाले बहुत ज्यादा प्राइस तो ना बढ़ा रहे हो। तो वो हम करते रहते हैं। बट जो आपने कई सारे पेपर ने कल रिपोर्ट भी किया है, और इन 2021 a 10% import duty was imposed on cotton। क्योंकि ऐसा है कि कॉटन में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं रहे हैं, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फॉर क्वाइट सम टाइम। अब उल्टा हो क्या रहा है कि कॉटन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है बट कंजम्पशन बढ़ रहा है एवरी ईयर। दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड, पहले तो हमारा ये था कि दिस ईयर वुड बी द फर्स्ट ईयर परहैप्स कि हमारा अब एक्सपेक्टेशन है कि 340 लाख बेल्स, 340 लाख बेल्स प्रोडक्शन होगा। इनिशियली इट वाज एग्रीकल्चर का जो एस्टिमेट था वो 362 लाख बेल्स का था, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड टू 340 लाख बेल्स एंड आवर कंजम्पशन दिस ईयर वुड बी मोर। बट ये होता है कि ओपनिंग एक स्टॉक शुरू होता है तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। सो वी हैव बीन सो फार प्रोड्यूसिंग मोर, कंज्यूमिंग लेस। नाउ वी आर कमिंग टू एन एरिया बिकॉज राइट नाउ स्पिनिंग इंडस्ट्री में कैपेसिटी एडिशंस काफी हो रहे हैं। Every month at least 1.5 lakhs to 2 lakh spindles are being added in the spinning industry because demands अच्छे हैं, yarn के डिमांड अच्छे हैं, क्लोथ के डिमांड अच्छे हैं, फॉरेन कंट्री में भी अच्छा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है चाइना से +1 सोर्सिंग के चलते। अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी हमारे पास डिमांड हमारे पास आ रहे हैं। तो
अब ये वी आर गोइंग टू अ स्टेज वेयर आवर प्रोडक्शन आवर कंजम्पशन इज गोइंग टू बी मोर देन द प्रोडक्शन। तो एक तरफ तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरी तरफ तो ये इंपोर्ट ड्यूटी के चलते और एक और चीज हो रही थी, अर्लियर आवर कॉस्ट यूज्ड टू बी अबाउट 10% चीपर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस। हमारे इंडस्ट्री को ये फायदा था। आज के दिन में हमारे प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस के बराबर हो गए हैं, सप्लाई एंड डिमांड है। तो इंपोर्ट करके 11% जो ड्यूटी पड़ रही थी, इट वाज बिकमिंग वेरी व्हाट शुड आई से, नॉट प्रोहिबिटिव फॉर द पीपल टू इंपोर्ट। क्योंकि इंपोर्ट हम दो कारणों से करते हैं, प्राइस कंसिडरेशन एंड ऑल्सो बिकॉज सर्टेन काइंड ऑफ कॉटन इज नॉट ग्रोन इन इंडिया। There is something called extra long staple variety of cotton, which is not grown adequately in India, colored cotton, contamination free cotton. तो ये हमने काफी दिनों से रेवेन्यू से और एग्रीकल्चर से टेकअप करके फाइनली इट हैज बीन डिसाइडेड दैट दिस 11% इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रहा था वो कॉटन पे नहीं लगेगा। अप टू 30 सितंबर का नोटिफिकेशन हो गया है। दिस विल हैव टू थिंग्स, वन दैट इट वुड enable people who want to import, they can import from whichever country they get, from USA, Brazil, Africa, from wherever. दूसरा ये भी इससे expected है कि जो इंडिया में प्राइसेस ज्यादा थे, in the sense कि those who are having stock and all, they thought कि भाई इनके पास और तो उपाय है नहीं, 11% import duty दे के और वो logistics cost bear करके तो लाएंगे नहीं। So in a way जो cost उसमें भी कॉस्ट घटेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी विद इन अ डे और टू वी वुड सर्टेनली सी द इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस गोइंग डाउन, बट एट द सेम टाइम वी डोंट एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू बी वेरी लो बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑल ओवर। एक्चुअली इट इज नॉट दैट द शॉर्टेज crops has got in India, crops got affected because of unseasonal rains and bollworm attacks. Similarly, in some other countries, USA and all, also crop got affected because of drought-like conditions. So थोड़ी supply कम है, demand ज्यादा है, इसके लिए cost ज्यादा है, but this import duty removal would certainly be both. It will enable more import to take place. At the same time, it will also have a salutary impact on the prices in India. So what is the merit in technical textile meeting a defense ministry's expectation and कितना % अभी हम meet कर पा रहे हैं? देखिए मैं परसेंटेज टर्म में तो अभी नहीं बता सकता हूं, बट वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद द डिफेंस मिनिस्ट्री। उनकी रिक्वायरमेंट चाहे वो हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट की रिक्वायरमेंट हो, जो भी हो, वी हैव बीन वी आर इन कांस्टेंट टच विद देम। व्हाटएवर उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम, आपको पता ही है कि कंपनियां तो प्रोड्यूस करती हैं, बट वी आल्सो वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ R&D एक्चुअली। तो जो आप जानते ही हैं कि हमारा जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बना है, वो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में हम उस पे R&D करते रहते हैं कि हम नए नए प्रोडक्ट्स कैसे ला पाए व्हिच विल मीट द रिक्वायरमेंट। तो आइडिया तो यही है कि हम डिफेंस की रिक्वायरमेंट भी आज के दिन में जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर पाए। बट राइट नाउ आई डोंट हैव फिगर दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ अ परसेंटेज व्हिच वी आर मीटिंग एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड व्हाट परसेंटेज वी वुड बी मीटिंग। Is it a substantial or is it just some? नहीं, substantially. Now that's what I told you, na, that we used to be a net importer of technical textile. We have already become a net exporter actually. So our import has been going down, our export has been increasing. देखिए इसमें टोटल ड्यूटी जो है, वैसे हम टोटल इंपोर्ट ड्यूटी 11% की थी, क्योंकि उसमें क्या है कि 5% वाज बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% जो है वो AIDC कहते हैं, जो एग्रीकल्चर सेस लगा था, और फिर वो 5 + 5 10 का 10% वो सेस एक्चुअली, तो वो तीनों मिला के 11% हो रहा था। तो दिस हैज बीन मेड जीरो। कल रात को ही नोटिफिकेशन हुआ है, कल शाम को। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से इसका लेना देना नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से हमारा कोई ऐसा इंपोर्ट कॉटन का नहीं होता है। This industry has been demanding for quite some time actually. So we had taken up with the revenue and the agriculture, and with the both of them agreed, and that's why the notification was issued yesterday evening. जो है जैसे जीरो कर दिया, इसमें तो क्या एक्सपोर्ट को भी हमारे नेचुरली देखिए अब ऐसा है कि इंडस्ट्री का एक मानना यह भी था, वैसे देखिए जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए पहले भी एक प्रोविजन है कि अगर आप केवल एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करते हैं तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। ऑन जीरो ड्यूटी यू कैन मेक इंपोर्ट,
बट हमारे इंडस्ट्री का यही कहना था कि टुडे बांग्लादेश और वियतनाम इज एबल टू इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका फ्रॉम वेयर एवर विदाउट ड्यूटी, बिकॉज किसी और कंट्री में ड्यूटी नहीं थी जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो उनका कहना है कि दे आर इंपोर्टिंग एट 0 ड्यूटी, वी आर इंपोर्टिंग एट 11% ड्यूटी, सो आवर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ऐसे ही आपको पता है कि विसर्विस वियतनाम एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एटसेट्रा, in certain markets like UK, we are at a disadvantage. We have to pay 9.5% duty, which they don't have to pay actually. तो वो तो हमारा डिसएडवांटेज था। अगर ये वाला भी डिसएडवांटेज जुड़ जाए तो competitiveness और कम हो जाती। So since now we don't have to pay this import duty, so this would certainly make our exporters more competitive. और वो टेक्सटाइल पार्क का सर जो आपने दिखाया था मित्र, ऐसा था कि हमने जो आपको खैर हाँ, तो आपको पता ही है कि जो बड़े इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने किए हैं, एक तो PLI के बारे में जैसे हमने बताया, वी आर वेरी हैप्पी दैट वी गॉट अ गुड रिस्पांस फॉर PLI. PM Mitra also we have got good response. PM Mitra is not confined to man-made fiber or technical textile. वहां पे कुछ भी लग सकता है, but whole idea of PM Mitra, as you understand, या जो मेगा टेक्सटाइल पार्क की हम बात कर रहे हैं, is basically a size and scale. क्योंकि हमारे पास साइज एंड स्केल नहीं है। इवन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैज मोर साइज एंड स्केल एज कंपेयर टू अस। प्लस हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी हो जाता है बिकॉज वी हैव अ फ्रैगमेंटेड वैल्यू चेन। एंड तीसरी चीज होती है कि फिर सप्लाई टाइम भी बढ़ जाता है। तो इन सबको देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कंसेप्ट ऑफ 5F, उस 5F के कंसेप्ट में ये बना है PM मित्र पार्क। तो हमने स्टेट से मांगे थे, लास्ट डेट वी हैड गिवन वाज 15th of February, 15th of March. 15th of March. So in response to that, we have got proposal from 13 states for 17 parks. अच्छा 13 स्टेट्स ने सर इसमें दिलचस्पी दिखाई। नहीं, दिलचस्पी नहीं दिखाई है उन्होंने, पहले दिलचस्पी दिखाई थी उनको हमने एक पूरा प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगा था। मतलब DPR तो थोड़ा बाद में बनेगा, बट व्हाट वी कॉल अ प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें काफी चीजों पे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, राइट फ्रॉम अ लैंड to what kind of a connectivity they have in terms of road connectivity, air connectivity, sea connectivity, the port connectivity, in terms of what is the raw material, what is the kind of textile policy, if any they have, power, water, lot of factors were there. Based on that, we have asked them a preliminary project report का हमने एक फॉर्मेट बना के उनको दिया था. They have submitted, 13 states have submitted. उसमें से 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा प्रपोजल दिए हैं. मध्य प्रदेश has given proposal for 4 and Karnataka has given proposal for 2. So basically 13 states have given 17 proposals. हम इसको basically अभी evaluate कर रहे हैं because as you know we have 7 parks finally to be in the first phase. At least 7 parks only will be approved. So this approval would be based on the what we call a challenge method. तो हम दोनों कर रहे हैं. उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको भी हम ले रहे हैं. हमने ग्राउंड ट्रूथिंग भी करनी शुरू की है. इनफैक्ट ये हमारी जो ट्रेड एडवाइजर बैठी थी, ही एंड सी एंड टीम हैड गॉन टू Tamil Nadu also to see actually. So we are sending now teams to these states also to get a first hand. आप जाके land देखेंगे कि 1000 acre minimum land which they have committed and they are saying that this is कोई वहाँ पे encroachment free, encumbrance free land है. And there are other things which they have said. So some kind of a ground truthing we are doing. Based on that, we would be shortlisting these relative merit, demerit. We will find out, and then we will go for phase 2. Phase 2 basically means finding a master developer. Because the crux of this PM Mitra Park is basically getting a good master developer. Because we would be basically giving a 30% assistance for the infrastructure, 500 crore maximum. We'll also give 300 crore incentive for the industry which will come first there. It's like a mini PLI within Mitra Park. But balance investment will have to be done by a private investor who will basically recover this money from the industry which will come there. So इसलिए getting a good investor is very important. So now soon we will start the process of getting a master developer for the shortlisted parks.
ये औद्योगिक रूप से कम पिछड़े राज्य में लोग भी दिलचस्पी दिखाएंगे इस 13 स्टेट में, बिहार, झारखंड, ये सब है इसमें? नहीं, बिहार है, झारखंड नहीं है। PLI वाले में तो नहीं होगा वहाँ पर। नहीं, बिहार में पीएलआई में तो खैर अब स्टेट का कुछ नहीं करना था। पीएलआई में तो कंपनीज की बात थी कि भाई कंपनीज वेर एवर दे फाइन, चाहे वो हाँ, तो बिहार से कोई कंपनी पीएलआई में नहीं आई है। झारखंड से भी कोई कंपनी पीएलआई में नहीं आई है, लेकिन बिहार ने प्रपोजल जो है पीएम मित्रा पार्क में प्रपोजल दिया है। Sir, if you could give the investment figures of Arvind Limited, Guinea Filament, Monte Carlo Fashion, and Kimberly Clark. अभी दे देंगे आप। जो टोटल इंसेंटिव आपने 10,600 something crore, so the entire investment that outlay will be utilized, which means that an additional money will be required, or they have to want to go for getting more companies. Utilization of this project. See, the outlay would also depends on, see, there is a range in the sense that, for example, in the first year, someone can get 2 times of investment plus 10% के ऊपर मिल सकती है. Like suppose if I am investing, let us say 400 crore, I can get incentive on 400 into 2, 800 plus 20%. But then how much they have projected? Most of the company has projected, in our opinion, a little conservatively, because some of the lines which they will producing is not included here. So as per the calculations right now, out of 10,683 crore, about 6,600 crore would be utilized. If they produce more than what they have projected, then more would be required. But otherwise, right now, 6,600 crore would be required by these companies which have applied. So we are contemplating to bring a PLI 2 as well. देखिए ऐसा है कि हमारा जो टोटल आउटले है इस स्कीम का 10,683 crores, which includes administrative cost also. So approximately, let's say, out of 10,600 crores, as per the projections made by the company, the incentive outgo, it may vary. If they produce more or less, it may vary, but as per the projections made, it would be about incentive outgo of 6,600 crore. 600 crores. So we still have The remaining budget. with the remaining budget, we intend to float another PLI 2. Now, of course, it will depend on the approval which we will get from the competent authority, but we plan primarily this to be utilized for apparel industry. कोई विदेशी कंपनी नहीं है ना सर? And we will use this. विदेशी company in the sense that International banks, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि वो कंपनियां जो हैं, one can say that they are basically more in the nature of joint venture. There are 6 such companies actually. ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो उसका जो होल्डिंग कंपनी यूएसए की है, एवगॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इजराइल की है, एवरटॉप टेक्सटाइल एंड अपैरल कॉम्प्लेक्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है, किमरली क्लार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है प्राइमरी जो पेरेंट कंपनी है यूएसए की है, राने टीआरडब्ल्यू स्टीयरिंग सिस्टम जर्मनी की है, टीजे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्रीलंका की है, टोरे इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जापान. सो देयर आर 6 प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली 7. There are 7 projects which are basically, you can say, they are basically originally a foreign company which has an India operation or the joint venture. थोड़ा इनके assessment बता दीजिए. Kimberly Clark का, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का. आपने जिसका पूछा अरविंद लिमिटेड का 170 करोड़ है. गिनी फिलामेंट्स, गिनी फिलामेंट का 180 करोड़. मॉन्टे कार्लो फैशन का, 311 करोड़. गोकुलदास 143 करोड़. and Kimberly Clark. 308 करोड़.
Thank you so much. Thank you very much. Was